Welcome, dear students. In the last video, we started the concept of supply of labor, whereas we discussed the income ledger trade-off. As we know, basically supply of labor is the behavior of individual or household to provide to supply labor for the firm and government. And we concluded in the last video that when there is an increase in a real wage, we can find two type of effect in the behavior. First one was the substitution effect, and in second was the income effect. And we concluded that the substitution effect is temporary, where there is an increase in a real wage, where is the effect is the permanent, where there is an increase in the real wage. We concluded that the reason was that the the relationship between the income ledger trade-off, and we know that basically the substitution effect will dominate where there is a temporary increase, and income will dominate when there is a permanent increase in the real wage. So individual will supply less, and in response to higher wage. So following the same concept, we are discussing about the labor supply curve. In the screen you can see that the labor supply curve is upward sloping. On the x-axis you can see n basically representing the labor, whereas w is representing the current real wage. So real wage and labor supply increase in the current real wage should raise the quantity of labor supplied. Labor supply curve relate quantity of labor supplied to real wage. So both quantities have the positive relationship. Supply Labor supply curve slopes upward because higher wage encourages people to work more. So these are basically factors that shape the labor supply curve. First one is wealth. Dear student, if very easy, this concept is very easy. Higher wealth reduce the labor supply. As we discussed in the income effect, if your wealth is increased, so the supply curve will move upward. Let's see, ये वाला portion है, it will move upward. So in this case, move upward, it in this case what will be happen, income effect will dominate, and people will try to leisure more. Higher wealth reduce labor supply, shift labor supply curve to the left as figure 3.8. Expected future real wealth, it is quite similar like a wealth, कि आपकी फ्यूचर में एक्सपेक्टेड ये क्या है कि आपकी वेज बढ़ने वाली है. नाउ यू बिकम मोर वेल्दियर, तो क्या होगा, सो रिड्यूस लेबर सप्लाई सेम एज लाइक लाइक आपने प्रीवियस वेल्थ की केस में डिस्कस किया है, क्या है कि शिफ्ट लेबर सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट, so labor supply will decrease. In the both cases, wealth increase or expected future income, in both cases the labor supply move. देखें लेफ्ट की तरफ मूव कर गया, तो आपकी जो है वो लेबर सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो गई है. So aggregate labor supply rises when the current real wage rises. Some people work more hours, other people enter labor force. Same as रिजल्ट क्या है, एग्रीगेट लेबर सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड. ये चीज तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. सो एग्रीगेट लेबर सप्लाई फैक्टर इंक्रीजेस लेबर सप्लाई. तो सेम है जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है, उसका रिवर्स पता है आपको. वहां हमने इंक्रीज वेल्थ कहा था, बट यहाँ डिक्रीज वेल्थ करेंगे तो आपकी लेबर सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी. डिक्रीज इन एक्सपेक्टेड फ्यूचर, देन आपका डिमांड कर्व जो है ना वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो आपकी रियल वेज
की इफेक्ट की वजह से क्या है, आपका सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इंक्रीज इन वर्किंग एज, आपकी क्या है कि जो है आपके पास वर्क पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज हो गई, हायर बर्थ रेट का या इमिग्रेशन की वजह से हो सकता है ये। तो भी सूरत में क्या है कि आपका सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी, राइटवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी। इंक्रीज इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, फीमेल्स हैं उनके अगर पार्टिसिपेशन बढ़ जाए, एलिमिनेशन ऑफ द मैंडेटरी रिटायरमेंट जो है, जैसे लास्ट क्लास में आपने किसी ने डिस्कस किया था कि 60 इयर्स की जो रिटायरमेंट एज है उसको 65 कर दिया जाए, 70 कर दिया, तो भी आपकी जो है सप्लाई जो है ना बढ़ जाएगी। इसी तरीके से जो है वो 18 इयर्स की जो आपकी जो है मैं एज से लेस कर दिया जाए है वर्किंग एज को, तो भी जो है ना आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज कर दी जाए हो जाएगी। सो दिस इज द समरी and which is very important for your exam, factor that shift the aggregate supply। ये this is basically summary जो हम पहले डिस्कस कर सके हैं। an increase in wealth will shift the supply curve to the left। इसकी रीजन क्या थी कि increase in the wealth, increase amount of leisure worker can afford, expected future real wage will move supply curve to the left, increase in expected future real wage, increase amount of leisure worker can afford। So in the same in the both cases, wealth and expected future, जो इंडिविजुअल का या ओवरऑल एग्रीगेट बिहेवियर जो है वो क्या है, वेल्दियर होने की वजह से जो है वो लेजर की तरफ मूव कर जाएगा, आपका इनकम इफेक्ट जो है वो क्या है, ज्यादा है। वेर इज वर्किंग एज पार्टिसिपेशन की वजह से राइटवर्ड शिफ्टिंग होगी। रीजन क्या है कि इंक्रीज नंबर ऑफ पोटेंशियल वर्कर, इंक्रीज अमाउंट ऑफ लेबर सप्लाई एंड पार्टिसिपेशन रेट, वो भी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल wanting to work, increase amount of labor supply। so for all these cases आपने जो है वो मैनुअली जो है फिगर को जो है ड्रॉ करना है, लेफ्ट किस तरह मूव कर रहे हैं, राइट किस तरीके से मूव कर रहे हैं। लेफ्ट मूव करने से जो है लेबर सप्लाई जो है वो डिक्रीज होती है, राइट शिफ्ट करने से लेबर सप्लाई जो है वो इंक्रीज होती है। एज वी डिस्कस इन द इस फिगर में देखें, लेफ्ट की तरफ मूव किया तो सप्लाई जो है वो डिक्रीज हुई, अगर राइट के वक्त राइट की तरफ होता, जो हमने लास्ट थ्री केसेस में जिसमें पार्टिसिपेशन और पॉपुलेशन टू केसेस की वजह से जो है ना राइटवर्ड शिफ्ट होगी, जबकि वेल्थ की वजह से ये या एक्सपेक्टेड फ्यूचर की वजह से जो है ना वो लेफ्ट की तरफ चेंज है, जिसमें डिक्रीज आपका है। आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से जो है ना वो समझ में आ गया है। एंड नाउ वी कैन स्टार्ट द लेबर market equilibrium। We already completed labor demand and labor supply। Thank you।